Assalamualaikum and welcome to Raheen's show. And this is Raheen Fatma, of course. And today we have Maha with us. I'm so excited to talk to her. So I think without further ado, let's get to Maha herself. Assalamualaikum Maha, कैसी हैं आप? मैं ठीक. How are you? I am doing great. So Maha, can you please introduce yourself for our audience? Sure. Well, I am Maha and I'm a yoga therapist. I heal and treat people through holistic therapies. And आजकल people are very depressed, lonely, and frustrated. So I'm calming them down. That's what I do for a living. I motivate them, and I'm a motivational speaker too. So that's it, I guess. Yeah. So Maha, let's start from the real beginning. आप Yeah, कहाँ पैदा हुई थी? Karachi, Pakistan. So you were born in Karachi. And how was your early childhood? Were you a naughty child, a shy child? आप किस तरह की बच्ची थी? I was shy, introvert, reserved, and I guess I still am, but Like not it, as much as you not were. as much. Yeah, but always been shy, introvert, reserved, quiet. Oh, I see. So when did you like started, making an interest in this, helping people get out of this, this depression and sadness and loneliness? Uh, Honestly, kindness and humanity is in my blood. Like my ancestors, they have been doing charity, social work. It's in our family. So I didn't really plan what to be in my life, but all I knew, I want to help people. So, like I remember, I don't know how old I was, but I was a very young kid, and I saved an animal from rain. Puppy. So empathy and compassion has always been in me. So I always wanted to do something to make a difference. So it naturally came to me, and it's been 20 years since I have been teaching, treating, and healing people through yoga and holistic therapies. So, and they have, mashallah, recovered too, miraculously. Yes, and so like मुझे ये बताएं कि सब like I feel like yoga is really good at healing and meditation. Certain types of meditation can really get you out of stress and that Mhm. mental state. So when did you feel like yoga is something that could be a tool to get out of depression? Uh, Honestly, when I started yoga, I was 15 years old. That time, there was no sign of yoga, or it was not so famous as it's famous now. Yeah, exactly. So, so I have studied from different teachers. Even after being a yoga instructor, the information is not enough. You always have to be updated and research and study. So like now I can tell you that yoga is really good because now the research say कि अगर आपने DNA में भी कुछ inherit किया है which can be dangerous for you or your family, you can take it out from your blood, from your DNA. How? Because there are breathing techniques. आप breathe करते हैं, आपकी thinking होती है. जब आपका thought process change हो जाएगा तो obviously you will change yourself, right? बिल्कुल. So thinking, breathing, meditation, yoga, and मैं कोई चीज भूलूं नहीं इससे पहले आपको बता दूं yoga is not only physical, it's mental, emotional, psychological, social, financial. It helps in every aspect. That's so true because I have been practicing meditation since I was 2.5 years old. तो मैंने Wow. बहुत टाइम के लिए किया. I was, for like 10 years I've done that. My father's been doing, जो professionally करते रहे हैं, that is for like about 20 years. But, informally जो है वो काफी सालों तक, like, he's been doing that. So that's, I think, where meditation came into me. And I feel like it really, breathing especially helps me with my stress. I do not look very pretty when I'm angry. So I Oh. look myself into the mirror and I start breathing. And then, there's, inhale from one nostril and then exhale from one. And then we start doing, some breathing patterns. And yeah, it helps you feel more sane.
It does. And apart from this, छोटे बच्चों का कोई सोचता नहीं है कि उनको योगा चाहिए होगा. वो समझते हैं कि या तो very old या women. Yoga is for everyone. So for kids, it's excellent because, for example, a kid who is very hyper can get calmed down. अगर वो उसको डर है या कोई भी, even youngsters, if they're scared and going to the stage, there are techniques, there are poses, there are breathing techniques कि आपको fear हट जाता है, डर हट जाता है, shyness चली जाती है. So basically, it's changing your life for a better cause without medicine. एग्जैक्टली और मैं तो बिलीव ही नहीं करती स्ट्रेस पिल्स में बिकॉज स्ट्रेस इज समथिंग दैट्स इन योर माइंड इट्स नॉट इन योर बॉडी योर ब्लड मतलब इट कैन नॉट बी फिक्स्ड विद a certain type of medication. That's what I believe. It's just about the mindset, and when you fix that using different techniques, of course, like yoga, meditation is some of the techniques. So I feel like it's all gonna go away. And जैसे आपने कहा कि shyness खत्म हो जाती है तो वो तो वाकई में खत्म हो जाती है because I have performed a lot. तो I just take those deep breaths and मैं तो वाकई में नीचे फ्लोर पे बैठ जाती हूँ ऐसे फुल दलाई लामा बन के. Exactly. It just goes away. It's good. Since we're talking about this, maybe people are not aware. It's good for singers, it's good for actors, it's good for performers. It's a amazing tool which आप ऐसा भी सिचुएशन होती है कि आपके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलेगा and after meditation and breathing you'll change and transform. People will be like, oh my god, is it really Rahim? They'll be shocked. Yeah, you can surprise people. Or Maha, I think you told me that you also did theater, and I feel like a theater actress का तो I think meditation तो उनका तो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए because as actors we need a 360 focus. हमें पता होना चाहिए कि हम किसी को ब्लॉक तो नहीं कर रहे पीछे क्योंकि बहुत दफा होता है एक्टर्स मुझे ब्लॉक कर रहे हैं और मैं पीछे देख रही हूँ and I'm just like what is happening? What is happening? और I think it really helps because we need to have all our senses there. मतलब कोई भी dialogue है, we need to know our cue, we need to go and we need to come off stage and everything. Exactly. And yoga above all is a lifestyle basically. आप learn करते हो, you are adapting in your life. Like for example, Islam हमें नमाज सिखाता है, right? रोजा रखना सिखाता है. So basically, it's teaching us how to be in the world, how to be a good human being. If we are not practicing what we preach, do you think we'll be better human beings? I don't think so. So that's what yoga teaches us, to be better human beings. To practice what we are. Like for example, poses को देख लिया, how to sit, how to walk, how to sleep, how to get out of your bed. झटके से नहीं उठना, उससे it can be very dangerous. And basically it's teaching us how to respect our body, respect our mind, which no school teach, which is very important, or puri life. You are mashallah very very young at the moment, but all my life we just heard be positive, but nobody taught us how to be positive. True. So that's what it's about. How to be. कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. There's always a solution. आपका माइंड नेगेटिव हो, उसको स्विच कर दे. Like for example, there are two kinds of people. एक आपको तंग कर रहा होगा और एक काम होगा. तो जो तंग करने वाला होगा, अगर आप उसी को देखते रहोगे तो फिर तो आप उसी में इन्वॉल्व हो जाओगे, right? So you have to switch to calming things, yourself, your breathing. आंखें बंद करके कोई भी चीज सामने प्रेजेंट पास में चला गया या फ्यूचर में चला गया दिमाग, oh my god what will happen, oh my god लॉकडाउन है, I'm getting frustrated, I want to eat out. तो उसको स्विच करके ब्लेसिंग्स को काउंट करें, gratefulness हो, that helps a lot, forgiveness helps a lot. It does help. And I want to share something with my audience is कि योगा is really really important. इसलिए क्योंकि अब योगा भी कहते हैं बहुत स्टीरियोटिपिकल होती है क्योंकि ये होता है कि जी सिर्फ औरतों को चाहिए होती है और सिर्फ बूढ़ों को चाहिए होती है और किसी के लिए योगा. At a point in my life, I actually started believing it and I stopped yoga and meditation. I thought it was not for me. I am too young to do yoga, and people made fun of me. They were like, "तुम क्या दलाई लामा बन के आ गई हो?" And I don't know because मैं तो क्या करती थी, so I would go to the beach with my dad, and I would be like, मैं बिल्कुल like I would try to pose for the picture, and I would do my meditation on sitting on rocks, so it looks more the
the kind of Professional. yoga pose that everybody would want to make. I would even wear Yeah. orange clothes because मुझे लगता था वो जिस तरह Oh, Buddhist monks होते हैं ना, उनकी ज्यादा अच्छी meditation is I because of love their that. orange clothes. Yeah, I love So, that. and Orange. I used to believe in all those things, and even still I kind of do, like in my subconscious mind I still feel like I do believe in those things. बट मुझे जब मैंने फील किया कि मेरी दोस्तें तो नहीं करती, आई लाइक 5 to 6 मैंने कहा लाइक नोबडी डज दिस, नोबडी नोज मेडिटेशन, और जिनको पता है थोड़ा बहुत दे आर लाइक दिस इज ओल्ड पीपल यार, व्हेन यू गॉट ओल्ड हम एक साथ बैठ के करेंगे. Yeah. तो आई फेल लाइक आई वाज, बिकॉज मैं पहले ही बहुत अलग सी थी. I would speak differently, I would dress up differently, I would look differently. तो फिर मैंने कहा यार I would do differently, तो फिर मैं बहुत different हो जाऊंगी. So I was like, no, I don't think so. Like yoga is my kind of thing. But then when I was more into these social gatherings and everything, I felt like everybody did that, no matter their age and everything. And I feel like मेरी introduction तो strong थी, but वो जो persistence होती है वो मेरी नहीं रही. तो इसीलिए आपको पता है, I'm actually co-authoring a book for kids meditation, like how parents could actually like formally introduce their kids to yoga and meditation. So Very good. yeah, I'm co-authoring it with Tristan Gribben, and we're still working on the book. And I feel like um, yoga, ताकि किसी को इस तरह ना लगे कि it's just for women who are in stress or just for old people who have nothing else to do. Exactly. We should always pass the information, spread awareness. एग्जैक्टली और किड्स मेडिटेशन तो ये होता है ना कि बच्चों, जिस तरह अभी आपने कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों को तो मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं होती, उनके पास तो Yeah. वैसे उनका बड़ा दिमाग हाइपर सा होता है, वो मजे करें, ये उनके दिन है. Babies का भी होता है. It's not only toddlers or even babies can do. I have done mama and baby yoga. It's a bonding session. अब देखें बेबी का साइज तो बिकॉज वो साइज छोटा है ना, लेकिन पूरी तो लिविंग बीइंग अंदर ही है ना, उसका माइंड है ना, बॉडी है उसकी. तो इट हेल्प्स इन बॉन्डिंग. मामा एंड बेबी योगा बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स. इट काम्स डाउन. अब उसको नींद अच्छी आती है. जो बच्चे रो रहे ज्यादा होते हैं उनको हेल्प करता है. तो इट्स नॉट ओनली टॉडलर्स या यंगस्टर्स और टीनेजर्स, इट्स फॉर एवरी एज, स्पेशली बेबीज. इनफैक्ट जब आप प्रेग्नेंट भी होते हो उस पे भी आपको हेल्प करता है. तो इट्स गुड फॉर एवरीथिंग. It is, and like you said, क्योंकि ये पूरा एक लाइफस्टाइल है ना. If I started practicing when I was 2.5, when I grow up, when I start my own family, तो तब भी if I am practicing it, then it will stay on for me forever, with me forever. Exactly. And Since so you like were talking, how much time did it take you कि आप लोगों को जब आप समझाती है, because पाकिस्तानी नहीं बल्कि around the world you need to make people understand sometimes कि सिर्फ मतलब बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी होता है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी होता है. बहुत ज्यादा आपको एक वो जो myth buster टाइप चीज आपको एक सेशन करना पड़ता है at first. yeah, So how long did this take? it took time, but mashallah, people are educated and aware compared to last years, like few years back. क्योंकि awareness ज़्यादा है. जो parents हैं, they are pretty cultured and educated too. तो schools हैं, तो I have taught in all the best schools. तो जितने भी best schools हैं, तो उनकी education system and they have awareness. तो माशाल्लाह हर जगह वो हो गया है. But theory भी होनी चाहिए apart from being practical, क्योंकि theory plays an important role as well. It's a whole science. Just imagine इतने सारे लोग जो खुदा ना खासा suicide कर रहे हैं, that will stop if we introduce yoga since school. Exactly. Of course, Because suicidal rate is really big now. And you see, अब तो इसी कि जब अब आपने देखा होगा महा कि there are a lot of people in the entire world. Maybe there's actually somebody who's committing suicide and thinking of committing suicide right now, like we are talking. Yeah. And as soon as like a celebrity you see committed suicide, so we pay more attention to this. I think so. हमें cause पे ज़्यादा attention pay करनी चाहिए, rather than nepotism पे हम चला जाएं and then we start going on to Bollywood casting directors and everything. We should be there for people. We should work on mind. If we work on our mind, so we can make a difference. And what's the point of education if your mind is not being educated, right? Exactly.
एंड आई फील लाइक कि महा अभी आपने देखा होगा कि मेंटल सिकनेस भी अगर हम देखें तो हम बहुत ज्यादा शर्माते हैं कि नहीं यार मैं कोई नहीं, बिकॉज हमें पागल कहेंगे लोग, हमें कहेंगे पता नहीं पागल पैदा हुआ है या जो भी है। Exactly. हमारे यहाँ ये होता है ना कि इफ somebody is not psychologically well, or if somebody feels के भाई I'm not doing well, मैं mentally ill हूँ, you just don't feel right, उसका ये नहीं होता कि आपको जरूरी बुखार होना है या फिर जरूरी आपने वॉक Exactly. करना, नहीं मुझे And बुखार है। you You know, just say I'm mentally फिजिकली तो फिर भी आप कोप अप कर लोगे, लेकिन अगर मेंटली आपका खराब हो गया ना, यू कैन नॉट कोप अप इन योर लाइफ। आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट होगी, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, आपका होल जनरेशन फेस करेगा। सो व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम? एंड एक और चीज मैं भूलना जाऊं, जस्ट लाइक योगा जिम इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर फिजिकल वेलबींग, इसी तरह थेरेपी इज एज इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल एक्सरसाइज। exactly. And I feel like कि जो I think हमें I don't know in Pakistan, but India and Pakistan like सब कॉन्टिनेंट वगैरह ये वाला जो प्लेस है, आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुई थी आफ्टर डियर जिंदगी। आई नो इट्स एक्चुअली अ फिल्म, Yeah, बट आफ्टर देयर वाज एक मतलब कि भाई यू कुड हैव अ थेरेपिस्ट, यू कुड गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, और आपको पता है कि आई फील लाइक कि अब अगर आप हॉस्पिटल में बैठ के यू डूइंग अ सेशन, इट्स लाइक वेरी समटाइम्स इट्स स्टूपिड टू डू दैट, you just feel sick when you do it in your own house, or you do it on a couch, or you do it like you're just talking, you're exactly, just chatting, exactly. because I I feel like कि हमें साइकोलॉजिस्ट की या फिर थेरेपिस्ट की जरूरत ही ना पड़े अगर हम बात करें, क्योंकि बात करने से बहुत ज्यादा मसले हल हो जाते हैं। अब मैं और वो एक बात और करती हूँ, कुछ या ज्यादा ही एक और मसले हल हो चीज जाते हैं। या एक और चीज नो आपके तो आई गिव यू कॉम्प्लीमेंट, यू वर टेलिंग मी दैट यू आर डिफरेंट, सो आई फील यू आर माशाल्लाह, आई एम अ बिट इंट्यूटिव एज वेल, आई फील यू आर माशाल्लाह very highly intellectually high and mature, so that's why you have developed certain things which your age group has not. Yes, and today like we just had a comment that I was actually about to say. Adil Khan keh rahe Maha is totally looking like Mariam Aurangzeb. You look very familiar to Really? Mariam Aurangzeb. She's the only Thank you. politician I know, literally. Oh. And एक और चीज मैं भूलना जाऊं, we were talking about कि जो आप बात की थी about this person who suicided, the actor. Yeah. What I would like to say कि हमारा जो behavior है ना, हमारा behavior, हमारे words, हमारे actions बहुत matter करते हैं. Trust me, I am a very strong woman, but it has affected me too. तो हमारा हमारे ऊपर जाता है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने मुंह से, अपनी जबान से या अपने एक्शन से ऐसा कुछ भी ना करें कोई हर्ट हो और वो खुदा ना खासा सुसाइड करे या सोचे भी, because if you're doing something wrong then we have to pay consequences either in a social life or in our life, it will come back to us as good karma, bad karma. So this is something which people don't realize it. एग्जैक्टली। एंड देखिए अब आपने भी देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा केसेस होते हैं लाइक वेदर दैट बी सुसाइडल केसेस और जो से भी केसेस होते हैं, समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, वी लैक रिसर्च, हम बैकग्राउंड रिसर्च नहीं करते। लाइक व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग इनटू सुसाइडल केसेस, तो हमें पता चलेगा कि पीछे टेंशन क्या थी, इवन इफ Exactly. सेलिब्रिटी पीछे क्या था, दे वर नॉट गेटिंग प्रोजेक्ट्स या फिर कोई लड़ाई हुई रूट थी, कॉज कोई क्या है? रिलेशनशिप का मसला था। We don't see that. All we see कि बंदे ने अपने आप को मार दिया, बड़ा गलत काम किया। That's what we're making comments about. We're not And see, saying a lot of people are following, they're suiciding after hearing about it. So many teenagers have suicided. oh So, my God. so we don't have to set a trend in a negative way. हमें, क्योंकि some people think कि fame और आपको success तभी मिलती है जब आप नहीं होते हो. So this is a wrong concept. Value people when they're alive. एंड दूसरी बात, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लगता भी है ना कि somebody is not fine या well, so rather than making fun of the person, help him. Exactly. Because मैं I am the kind of listening person in my friend group. तो जो भी जिसको भी कोई मसला होगा ना, they would come to me, they would start talking, अब मुझे तो बताओ तो मैं करूँ क्या,
and then I would Oh, give them my part of advice, because I feel like because I don't know, it's naturally into me, or I'm other people tell me, I take it as a compliment. Yeah, I'm very good at listening. I'm just that trustworthy kind of person. I've actually had strangers calling me and telling their love stories to me. I'm oh, like, great, you trust me. That's, that means the world to me. Great, awesome. That's always gonna stay with me. yeah, that's the thing. People need someone, and I want to tell people there is a person who is ready to listen you out, hear you out. It's very important to talk. It's very very important. और सही इंसान को बताना ज़्यादा important है. खुदा ना खास्ता इसीलिए for example अगर आप therapist के पास जाते हो तो she has the right not to leak out that information because it's a social etiquette. तो इसी तरह खुदा ना खास्ता आपने किसी और को बता दिया फिर लीक आउट हो जाती है so many things right. So अंदर रखना भी बुरा है और किसी को गलत इंसान को बताना भी बुरा है. तो इसीलिए थेरेपिस्ट रखे जाते हैं. तो थेरेपिस्ट का फायदा है let out, she's listening, she's there, she'll never leave your side, you know. And I believe in holistic therapies जिसमें medicines नहीं है, जिसमें कोई चीज artificial नहीं है. I take people to therapy on the beach, on the grass, forest bathing, forest therapy, nature therapy, painting, art, talk therapy, yoga, breathing, everything in a healthy way. So, you know, it Exactly. helps. And Yes, then I because make them independent, not dependent on me. Learn करें, अपने आप को improve करें, and then move on, inshallah. and I feel like कि जैसे हमने आर्ट थेरेपी का कहा, आर्ट थेरेपी रियली helps me as well, because ये तो नहीं है कि भाई मैं बहुत फेमस हूँ, तो मुझे तो कोई मसला होता ही नहीं है, या फिर मैं कोई दुनिया में बहुत अलग इंसान हूँ. तो ऐसे तो कोई बात नहीं है. I have my, I sometimes have my days, because Yeah. अब जिस तरह लास्ट संडे से लेके आज I'm live again. Before that I was not doing well, I was really sick. And Yeah. तब I was doing art. मैं art कर रही थी. Because my brother, Yeah. I stopped doing art because I felt like a baby. I felt मतलब कि बच्चों वाली चीज होती है, बच्चों वाली चीज. But then जब मेरा भाई पैदा हुआ, then he started growing up, जब उसकी वो जो पेंटिंग वाली एज, वो आर्ट वाली and crayons all over our house वाली एज आई. So he was like, Appa, you have to paint with me. So when I used to paint with him, I felt like, whatever I'm feeling, I just put it into abstract art. But he's actually Yeah. really good at abstract art. I mean, You because are आप this, अगर देखिए, जी, sorry, you're inventing something. Now you're expressing yourself. It's so important. Like art, theater, acting, exactly. singing, And dancing. and I really feel like a theater can really help with this, because when I'm in the theater, I don't like people calling me Raheen. I'm not Raheen right now. I am Banu, or I'm any of my characters. So Oh, that's nice. whoever's playing my father, I would call him Baba. Whoever's playing my Oh, brother, I'll call him, whatever the name is. So मैं उस वक्त full character में होती हूँ. So anything you're discussing, I'm like, what? So I'm really much into, you get to live somebody else's life. And then you get to exactly. appreciate your own. Yeah. And everybody is like a family. So that's the best part. It is, because मुझे याद है सबसे फनी बात, मेरा जो फर्स्ट प्ले था उसमें आई हैड टू सेट्स ऑफ पेरेंट्स. बिकॉज ये था असल में, तो मेरे जो असल असल वाले राहीन के जो माँ बाप थे वो भी सेट पे हुआ करते थे. एक थे माँ बाप जो जो मेरे कैरेक्टर के माँ बाप थे. तो वो ये होता था कि व्हेन आईड बी लाइक दैट, आई कॉल बाबा, तो दो बंदे बाहर आ जाते थे. व्हेन आईड कॉल अम्मा, दो अम्मा आ जाती थी. तो वो बहुत इट वुड बी रियली रियली मजे का. एंड व्हेन वी हैड रिहर्सल्स, बिकॉज कोरोना में हमारी एक दफा हमारा प्लान था कि वी डू समथिंग ऑनलाइन, बट देन नहीं हुआ. Yeah. लेकिन हम लोगों ने जब एक आध दफा रिहर्सल की, तो ये होता था, व्हेन आई मैं बहुत चीखती हूँ ना, मेरा मेरा कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा चीखता है. तो आई कॉल्ड आउट बाबा, और दो बाबा ने उधर से हाँ बोली. वन केम इनटू माय रूम, क्या हुआ बेटा? एंड द अदर वाज Oh, लाइक, जी जी. So like this happens all the time. So it's really yeah. fun, and I get to appreciate what I have in my life that that girl did not have, and what she has that I do not have. But Exactly. I And appreciate. one more thing, you mentioned your parents. Parents should support their child a lot.
if they want to do something, because एक आपकी एनर्जी होती है जो आप खुद कर रहे हो, एक होता है जो कोई और दे रहा है, उससे आपकी पूरी फ्लरिश करती है. बिल्कुल. That's very important. तो जस्ट इमेजिन अगर आपको एम्पावर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उससे एनर्जी मिलती है, आपके बच्चा और इम्प्रूव करता है, और एक्टिंग निकलेगी और आपके पोटेंशियल्स निकलेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू हेल्प, सपोर्ट, अंडरस्टैंड अ चाइल्ड. हर कोई डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ. That's so true. Because मैं तो बेचारी शुरू से ही साइंस में ऐसी थी कि अम्मा बाबा को पता था ये तो डॉक्टर टाइप है ही नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा मेरा जो है ना एक बड़ा वो साइंटिफिक किस्म का लेवल है, उससे ज्यादा साइंटिफिक चीज भी मैं नहीं पढ़ सकती. Yeah. So they knew I was more of a mathematical kind of person because I'm good with numbers and I'm good with history. So this is just two subjects जो मैं थोड़ा सा कर लेती होती हूँ. आजकल जो है मैं टेक्नोलॉजी में भी हूँ, बिकॉज फर्स्ट मुझे अभी तक एक्सेल नहीं मुझे करना आता, बहुत ज्यादा चीजें मुझे नहीं करनी आती, बट यू नो एज अ 12-year-old आई फील प्राउड that I can make my links and you know इस तरह के काम वगैरह. StreamYard and Zoom, I am a very good expert in that. That's amazing. It's very important to be updated. Yes, and I feel like कि कोरोना में हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि at the time मैं तो लिटरल आई वाज एट द वर्ज ऑफ क्राइंग. मैंने कहा यार मुझे क्या अंदर बंद करके रखती है, क्योंकि मेरे साथ ये मसला है, क्योंकि मेरी दोस्तों को भी पता है गर्मियां आ गई हैं, तो देयर इज गोना बी ओनली 2 places दैट यू कुड फाइंड राहीन. या तो घर पे नहीं है तो दैट मीन्स शी इज एट द स्विमिंग पूल, और अगर तो वो घर पे नहीं है द सेकंड आंसर वुड बी कि वो गई हुई है, वो कहीं गई हुई है, शी इज आउट ऑफ, बिकॉज मेरे अब्बा एयरफोर्स में, तो वी लिव इन दैट कंपाउंड, तो वो बाहर गई हुई है. मैं आई वुड रेयरली कम होम, मतलब रात कहते हैं ना आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो रात को सोने के लिए घर आते हैं. I'd come from school, I'd go out for rehearsals or I go out for an event or something. मुझे घर पे नहीं रहा जाता है, मेरा थोड़ा सा मसला भी है. लेकिन मुझे रेस्टोरेंट्स इतने मैंने मिस नहीं किए जितने मैंने अपने इवेंट्स मिस किए. बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी जो कैंसिल होगी, लेकिन वो फिर ऑनलाइन आ गई. बट वो जो फीलिंग होती है ना दैट यू नो फिजिकल इंटरेक्शन विद पीपल, वो मुझे जरा थोड़ा सा. It's healthy. एक और चीज, you mentioned April of Samadno, right? बिल्कुल. I have taught in Karachi Air Force Base. It was an amazing experience. Air Force, Navy. I lived here for 3 years. मेरा बहुत early childhood वहाँ पे गुजरा, और वहाँ पे मैंने meditating start की. So yes, I've lived there. But I'm moving again. I'm moving. I'll probably be moving next month. या फिर maybe in 2 weeks or something. Where are you going? I'm going to Chaklala. I'm going to Rawalpindi, तो इतनी दूर नहीं जा रही मैं. Okay. Because मुझे बहुत डर था, मैंने कहा मैं इस्लामाबाद से दूर जा रही हूँ. Because ये होता है कि मेरी कॉमेडी के जो शोज वगैरह होते हैं वो ज्यादातर इस्लामाबाद होते हैं या फिर पिंडी होते हैं, तो मेरा यही था कि मैंने कहा यार मैं दूर चली गई, मैं क्या करूंगी. बट मैं इधर ही हूँ. They cannot just kick me out of the region, you see. No, I see a lot of potential in you, and I am definitely sure you'll rock the world. Thank you so much, Maha. You're welcome. For coming, for giving such beautiful compliments, and of course for telling so much about yoga and so much about stress to our audience. And I would tell to my audience, you feel stressed, किसी से बात करें, somebody who you feel is reliable. If I am lucky enough that you feel I am reliable, I would always be open to talk about something, but make sure that you tell me what we are talking about. Okay, is it appropriate to talk about that or not? Okay, and that's why it's very important to go to certified professional therapist. क्योंकि एक मोड होता है कि अंदर से निकल रहा होता है, and God forbid if something goes wrong, then the person should know how to handle it. बिल्कुल. Overflow हो रहा होता है, overwhelming होता है, तो not everybody can handle it. So it's very important. And खुदा ना खास्ता आप किसी नेगेटिव को बता रहे हैं तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है. So why are you giving a chance to someone to take advantage of you? So just go to the right people. Therapist जो के professional है, certified है. I'm there anytime they want. I'm there, and मेरा purpose of life यही है, to make a difference and to be there for others. That's so awesome. Thank you so much, Maha, for coming. Thank you so much for watching, everybody. Don't be stressed.
you know, you just don't feel stress. आप ये करें कि या फिर online किसी दोस्त से बात करें. Try to keep as much human connection as possible. You know, go to webinars, go to, you know, वो तो ये होता है ना, वो जो लिंक वाले वेबिनार्स होते हैं, just give the link and you just go and you talk and, you know, talk to your friends, try doing something fun, you know, try cooking, try dancing, try singing, so you know, Baking. whatever makes you feel happy. Yeah. Thank you And so much for inshallah, watching. you're welcome. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Bless you.